Has Buddha in it, huh? Yes. So I was very fascinated with this It is a very nice carving. bowl, yes. And I like this kind of texture. It's very good. Yeah, actually, it's a very nice piece. Yeah. It's both, I think, a machine made and then a handmade. Yes. There is another one I want to show you. I could not understand actually how are they different actually. This is. I mean, obviously, whoever has made it, they would know better. But this is called a lingam bowl. Okay. So there's a shivaling in it. Oh. So we actually, for example, अभी दिवाली आ रही है और दिवाली पर देव दिवाली आती है. Oh, अच्छा. Where actually Shiva is celebrated. I don't know when it's coming. Okay. I think it's about 15 days after the Diwali. Okay. So that's the best time to use this. And actually, not only they are nice singing bowls, I also use them as diyas. Yes. Oh. As metal diyas. आप इसमें देसी घी डालकर light भी कर सकते हैं. मैं तो I use it at my home. Very nice, very good. No, I like both. I mean, these are my favorite. You know, very small and they look really nice. I just love them. They do. And I see you have actually a nice collection of bowls. So I think we will they're quite diversified. So Sanj, since you're already here, and we are feeling very blessed that on Diwali time you're here. Well, I can't share in my words how happy I am. But I haven't done many Diwalis in India for many years, so I'm also very happy. I've heard about it that it's very difficult to catch Sanj, but somehow it was in our destiny. So Mine too. I think destiny made it possible. So if you're here, we can have a little interview with you, and you can share more about your bowls and the sound healing therapies which you give all across the world. So if you have some time and you want to, sure. yes, I think we already have some hand over beautiful the mic bowls. to him. Sure. Thank you very much. So these are few bowls which we have already here. So though I don't know much about them, I mean they look very beautiful. So if you can help us out. Meaning, first of all, I must congratulate you or appreciate you that you have very nice touch of the place. And also the quality of your bowls looks like you have handpicked them. And we normally say you don't pick your bowl picks you. So it looks like these bowls have said, Mamta, come and pick me up. So this, of course, is I think if I play, is a handmade bowl. They are generally not found in India. So usually, I think they probably come more from Nepal, and I think very few families even there make this kind of a bowl. So I think you're very blessed to have a bowl like that. So what exactly is written here? These are some mantras, or do they have any significance? Say normally what happens is, to be very honest, so these are the mantras. In a Buddhist monastery, you use plain bowls. But normally in Buddhism, if you do one round, you kind of done one mantra of a mala. That's the reason if you go to a monastery, you will see there are a couple of mantras are written on big cylinders and you move them. So if let's say if I'm doing Om Mani Padme Hum, and if Om Mani Padme Hum is written here and I just do like this even without chanting, it's a kind of have done one mantra, or if I do say by 100 times, then you get done one mala. And so normally they have Buddhist mantras written on it. Okay. This is also flower of life. This is what I wanted to ask. So what symbol is this? So this is a flower of life. Some people also call seed of life. Okay. And as you know, there is a golden ratio. So basically everything in the word follows a golden ratio. And this is based on it. Maybe another day I can talk more about it, because I'm very intrigued with everything you have here. Yes. But it's a beautiful bowl, meaning it also has, I think, at the back. Yeah, by the back also. So what you said? It's some people call seed of life. Seed of life. Tree of life, or flower of life. Basically, it's a flower of life. Oh. Yeah. So these are my favorite ones, as I told you already. Yeah. This is also like very shiny and golden and. Yeah, meaning this bowl is I think more popular among people. I think most people who start with anything, they probably start with a bowl like that, because they are a single note. So if I'm playing with a musician, then I prefer this bowl because they have one single note. You can also rim it. Beautiful sound. Yes. Meaning they are machine-made bowls. I, for a sound healing, generally use a handmade bowl. But when I'm playing with musicians,
I use this. Also, a lot of people for their home buy this because usually it's a first bowl for many people. Okay. They look beautiful, they have a beautiful energy, and they have a beautiful sound. Meaning, why not? Yeah. And they look like a good gift. In fact, I'm thinking Diwali is over, so why not gift these as a Diwali gift? You know, I think we can gift. I mean, I think that's a beautiful idea because in Dhanteras, normally I think we buy jewelry, people buy gold and silver, you buy utensils of brass and copper. So they are usually brass or what you call bell metal, and I think it'll be a beautiful thing to buy during Dhanteras. And also in Diwali, yeah, I think it's a great idea. Instead of say if you're not buying bartan anymore, also the problem is if you buy a copper or a brass bartan, then today you're supposed to do a tinning process every few days or every few weeks, which you probably can't find anymore. So a lot of times we actually use these bowls to keep it at home. Meaning, if you want to serve a dry fruit or something in it, you probably can. I would not suggest to eat from here because we still don't know what kind of purity level of these bowls are for eating or cooking. But if you want to, let's say, serve a dry fruit, or you want to use some water and put some flower petals in it, that can be done. I think you can beautifully use it. And you can also kind of keep water, charge it, and also maybe later use the water to sprinkle for cleaning, for house cleaning. So I certainly suggest to everyone that they must have one bowl or a shank at home, and if they don't want a handmade bowl which are more expensive, at least pick something like that. I'm not saying something is better than nothing, but this is surely a very nice piece if you want to do something starting bigger, smaller, and if you really want a beautiful energy, maybe then you should go for a handmade bowl. Yeah. Okay. Also, I wanted to ask you, like as you told that we should keep one bowl in the house. Like one person should have their own bowl, or whole family can use it, or is it more for personal growth or personal benefit, or one bowl can benefit the whole family and the house? What is it like the? I mean, if someone would really want to get into it, if they really want that. Say, first of all, my guess is that we are not making sound healers. Okay. We're just trying to keep good energy in our house, which is also, I think, we call like shodhan. And I think it's important during Diwali time. We also do a shodhan of the house, and these bowls kind of are beautiful for home, even if you don't buy for yourself. Meaning, ideally, we would suggest that everybody should have a instrument of their own, which is their energy. But there is a collective energy at home, and I think if nothing else, at least you start with maybe one piece for yourself. Maybe you can do this, or maybe I see a beautiful shank there. You can also probably. Can I try? Please. So the evening time, if you would want to play this, that'll be lovely. I mean, are you okay? I mean, I'll be more dressed. Yes. And it's the Dashara today, so. Oh yes. It is Dashara, so I think in Gandharva playing this is going to be very. That's a very nice. I think my understanding is they actually come from Indian Ocean. I don't know much about these shank, but there is surely another shank that comes which you can find. You can even do carving, which are very typical to an Indian temple. Meaning is also a beautiful shank, and I suggest again, if you either have a bowl or a shank or maybe both, I think that's a beautiful addition to kind of every home. So this usually I think people keep it at in the house, because many temples में देखा मैंने, घर में थोड़ा कम देखा, but I think इसमें they put some water, पानी भी रखते हैं उसको कुछ. हाँ जी. Pandit ji is doing it. Actually, most Bengali families घर पे शंख होता ही है, and I think दुर्गा पूजा के समय पे शंख बजाते हैं वो लोग, and मेरे हिसाब से तो हर एक घर में एक शंख एटलीस्ट मंदिर में पूजा के लिए होना चाहिए. एंड मुझे नहीं मालूम आपने ये किस से और कहाँ से लिया है, बट ये बहुत सुंदर साइज़ है, क्योंकि इससे छोटा, इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग,
जितना छोटा बोल होता है उतना उसको बजाना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी आवाज़ उतनी शार्प होती है जितना बोल बड़ा होता है। पर्सनली लोगों को लगता है उसमें बहुत एनर्जी लगती है, एंड आई थिंक इट्स आल्सो वेरी गुड फॉर योर लंग्स। बट बिगर बोल्स, एंड आल्सो मे बी another video another day when we will do it, I'll talk more about shank, how a bigger, because shank is basically is a is the outer skeleton of a snail. So as the snail becomes bigger, this actually becomes bigger, and we feel के एक जैसे हम कहते हैं ना, जैसे when we die and अगर हम अच्छी उम्र में गए हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि इस सब इसने को दुनिया में देख लिया। वैसे ही ये शंख एक अडल्ट शंख है। इसका मतलब अगर आपके घर पे है, इस शंख ने अपनी पूरी एक लाइफ देखी है। जबकि जो छोटे शंख होते हैं एक्चुअली वो फिशिंग नेट में आ जाते हैं और लोग उसको बेच देते हैं, फिर वो बेसिकली द डाई। सो आई डोंट वांट टू यूज अ शंख वेयर एन एनिमल लाइफ हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड, स्पेशली फॉर हीलिंग और फॉर पूजा। तो ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये एक अडल्ट शंख है। इसका मतलब है कि अच्छा है कि इसने अपनी पूरी लाइफ जी है। तो इसको पवित्र क्यों माना जाता है? लेकिन मुझे ये चीज़ आपसे जाननी है कि हमारी हिंदू संस्कृति में इसको इतना ज़्यादा मतलब हम महत्व क्यों देते हैं? आई थिंक इसका एक अलग ही शायद एक दिन अलग बात करेंगे, लेकिन सागर मंथन में ये इसका एक खास जगह है, एंड इसका नाम एक्चुअली मैं आपको अलग दिन बताऊंगा। खास बात शंख की ये है कि ना सिर्फ ये एक एनवायरनमेंट को पवित्र करता है, अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब ये इसको प्ले करते हैं तो जो एक नेगेटिव एनर्जी, जो एक कोविड जैसे समय में या जिस घर में कुछ बीमारी है उसमें अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका घर वाकई बैक्टीरिया से, वायरस से एक तरह से क्लीन होता है। एंड आप चाहें तो इसकी स्टडीज़ पढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी पवित्र माना जाता है, और कई लोग इसको कान में रख के ऐसे सुनते भी हैं, और कई लोग इसमें पानी डाल के इसमें से, तो ऐसे कान पे रख के सुनने से कुछ आवाज़ आती है? आप सुनिए। अच्छा, मैं I would want to. Oh yes. Yes. I didn't know this. हाँ जी। This is beautiful. हाँ। This is like, you know, मुझे स्पेस की जैसी आवाज़ आती है। हाँ, स्पेस जैसी आवाज़ आती है। बेसिकली समुद्र की भी एक शांत आवाज़ भी है इसमें। जब उसमें वेव्स नहीं है, जब वेव्स नहीं है, बिल्कुल डीप में आप चले गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। Yes. तो इस पे मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जिस शंख को आप बजाते हैं उस शंख से पानी डाल के आहुति नहीं देते। अच्छा। तो ये बात मान लें कि अगर आपको पानी डाल के भगवान को पानी देना है तो उसके लिए शंख वो नहीं होगा जो आप बजाएंगे। उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, पर क्योंकि मैं आपकी जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मुझे वहाँ पर एक सुंदर से एक और बोल, तो सॉरी अगर मैं थोड़ा टेम्प्टेड हो रहा हूँ, अगर मैं इस बोल को देख लूँ वहाँ। This has got a very nice purple color actually. जी जी जी। And इसमें एक गॉडेस बनी हुई हैं। जी जी, मेरे ख्याल से शायद ग्रीन तारा है मेरे ख्याल से। तो अब ये बोल जो है बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका कलर नहीं पसंद आता, और वैसे भी ये कलर किया हुआ है। ये जैसे जो प्रास के बोल्स हैं उनका अपना नेचुरल कलर है, ये ऊपर पेंट किया हुआ है, तो अगर आप ये कभी लेंगे तो इसका पेंट चिप हो जाएगा। लेकिन जब मैं स्कूल में, कॉलेज में या बच्चों के लिए प्रोग्राम करता हूँ तो मैं ये बोल, बड़े स्टर्डी बोल्स हैं ये, और ऐसा कोई नहीं जो इस बोल को नहीं बजा सकता। जोश बेल जैसी आवाज़ है। मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो इस बोल को ना बजा पाए, बिकॉज ये बोल की खासियत है कि ये हर एक किसी से बचाएंगे। वाइल दे आर नॉट मेड ऑफ ब्रास, इसका कुछ कंटेंट होगा, लेकिन ये बोल दिखने में भी सुंदर है, रखने में सुंदर है, और स्टर्डी है। बाई चांस गिर भी जाए तो ये टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, डेंट नहीं होंगे, और कोई भी इसको बजा सकता। स्पेशली बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि अगर हम कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ सिखानी है किसी को तो बचपन से सिखाएं, तो इट्स वेरी गुड इफ चिल्ड्रन स्टार्ट विद समथिंग लाइक दिस। एंड एक चीज़ और, नॉर्मली हम बोल के अंदर इसको नहीं रखते हैं। नॉर्मली आपने अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी कि बोल के अंदर साइड पे रखना है, क्योंकि बोल इस टाइम पे भी प्ले कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा। लेकिन प्ले ज़रूर कर रहा है।
तो जो हवा आ रही है उससे प्ले हो रहा है। बिल्कुल, तो ये अपनी एक अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आपके घर पे पड़ा हो, आप ना भी प्ले करें तो भी ये आपको एक एनर्जी, एक अच्छा नाद, एक अच्छी वाइब्रेशन घर पे दे रहा है। ये आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि बच्चों को हम अगर शुरू से ही इस चीज़ में थोड़ा सा अगर इनफैक्ट मैंने देखा हमारे ऑफिस में जब से हम ये लेके आए हैं तो जी, जी, जी। हमारे हाउसकीपिंग में जो छोटे बच्चे मतलब यंगर जो लोग हैं जी, जी, जी। वो बहुत ही फैसिनेटेड है, वो खुद ही जाके अच्छा मैम क्या हम इसको बजा लें, मतलब वो बहुत टेम्पटेड होते हैं। तो आई थिंक जो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं बच्चे, जी, जी, जी। और जो मोबाइल में और इन सब चीज़ों से अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें घर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आई थिंक ये उनके लिए, उस जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम आई थिंक इट्स मतलब एक अच्छा मेडिटेशन का प्रोसेस भी। आई थिंक आपने मेरी मन की बात छीन ली, बिल्कुल। आई थिंक वो क्या होता है कि कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं हमको, वी डोंट नो दैट दिस इज़ गुड फॉर अस, दिस इज़ गुड फॉर मेडिटेशन एंड इज़ ए ईजी मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन को सहज बनाना भी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डीप नहीं जा रहे, लेकिन कई बार सिखाने के लिए इफ़ यू मेक इट ईजी पीपल गेट मोर इनटू इट। जैसे मैं आई हैव अ गिटार एट होम एंड माई सन यूज्ड टू प्ले गिटार, एंड उसका पहला गिटार स्टूडेंट गिटार नहीं था, उसका पहला गिटार मैंने उसको प्रोफेशनल यहाँ का गिटार लेके दिया। एंड द रीज़न इज बिकॉज द मोमेंट ही स्टार्ट टू प्ले अ गुड गिटार ही वॉज एनकरेज्ड। तो मेरे हिसाब से मैंने एक वेबसाइट देखी थी, उसमें लिखा था बाय नाइस इंस्टेड ऑफ बाइंग ट्वाइस। एक अच्छी चीज़ घर पे एक बार ले आए बजाय कि 3 चीज़ें जो बहुत अच्छी नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से ये अगर आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो हम कुछ बच्चों को जरूर बुला के आपसे क्लास करवाएंगे। जरूर, वैसे हम सभी बच्चे हैं लेकिन हाँ, छोटे से बड़े सब आप ला सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ममता जी, बहुत अच्छा लगा। आई रियली एंजॉयड बीइंग हियर। वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल दैट यू गिव अस अ विजिट। अरे नो एट ऑल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे। तो फिर कभी किसी और दिन और मैं आपसे थोड़ा और साउंड हीलिंग के बारे में भी जानना चाहूँगी। जी जरूर। कि मतलब ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है और साउंड हीलिंग में मैंने देखा है कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। जी जी जी। तो उसके बारे में भी हम अगले ज़रूर ज़रूर। और हम ऐसे बात करेंगे कि अगर आप साउंड हीलर हैं तो आपको क्या चाहिए, और अगर आप साउंड हीलर नहीं है और आप सिर्फ घर में एक अच्छी एनर्जी चाहते हैं तो हम क्या रख सकते हैं। ज़रूर ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।